Welcome back to the next lecture. I think you have watched the first lecture on the engineering mechanics, why we need it. If you have not, make sure that you watch it because that will probably give you some prospect. Why do you need to learn engineering mechanics? But anyway, keep that aside. We are going to talk about force system. This is going to be we are actually going to cover the actual content of the engineering mechanics from this class onwards. Now, before I start, fourth system here, whatever we are going to cover, you will see that most of the thing already आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये आप पढ़ चुके हैं, but still we are going to revise it. Revise करने के बाद आपको ये याद भी रह जाएगा, और आप देखेंगे जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे, you will see that more and more we are going to do the practice and we are going to learn things as we go forward. Okay. It is very important that whenever we are doing this, if you're watching this video, make sure that you watch it with the learning spirit. You have a notebook in your hand because engineering mechanics is all about practice. Because if you do not practice, you may understand a problem. कैसे problem solve करते समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाएंगे देखेंगे कि वो नहीं बन रहा है एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरा प्रॉब्लम करना है, राइट? So it is very important that we practice as we go along with the class. But anyway, let us start the course. Okay, now I think you can see the screen. Now this is the first. We'll talk about the classification. Now, see this entire module, it is on the force system. Now, force system can be divided into the two broad category. One, you can see that this is, let me put the pen here. This is the coplanar force and this is a non-coplanar force. So these are the two major category that we have. हम लोग जब बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल सी हम एक कोप्लेनर फोर्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोप्लेनर फोर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोप्लेनर फोर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल सी दैट आवर मेजर फोकस विल बी देयर इन कोप्लेनर फोर्सेस. सो कोप्लेनर फोर्स में भी आप देखेंगे, अगर इस एरिया अगर आप नोटिस करेंगे, कोप्लेनर फोर्स में भी दो सिस्टम है, एक है कॉन्करेंट सिस्टम, अनदर इज नॉन कॉन्करेंट सिस्टम. तो पहले हम ये समझ लेते हैं, ये कॉन्करेंट सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम क्या है, कोप्लेनर सिस्टम क्या है. हम आगे बढ़ते हैं. या हियर नाउ लेट्स लुक हियर. नाउ थिंक इट इज अ कोप्लेनर फोर्स. कोप्लेनर फोर्स मतलब how many, I mean, if all the forces acting in a same plane, we call it coplanar force. इसको आसान भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सब फोर्स, जितना सारा फोर्स आपका सिस्टम में है, वो अगर सब एक ही प्लेन में है तो उसको हम कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं. मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूँ. जो फोर्स आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसा सोचिए कि स्क्रीन एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर सब फोर्स इसी प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है. सो स्क्रीन is a plane for you. On that plane, all the forces are acting. Hence, I can say that all the forces that you're going to see, ये सब coplanar force system है. So, in short, we can think it this way: if all the forces are working in a single plane, that we will call it a coplanar force. ठीक है? So, ये हो गया हमारा coplanar force. ठीक है? Just to make sure that you understand the plane here, let's say you look here, this is a space frame. Here you can see that it is a 3D structure, right? There are a lot of frames. This is, one frame is connected to another frame. This has built a 3D structure, right? You see it is a 3D structure here. Out of that, let's say if I take only one single frame, I can show it this way, right? So out of here, this is a 3D. Out of that, if we take only one single plane, वो सेम प्लेन को अगर हम अलग से देखेंगे, इसको हम एक फ्रेम बोलते हैं. ये फ्रेम अब 2D में है. सो दिस इज अ प्लेन. सो दिस इज अ 3D हियर. You understand there are 3 dimensions: length, width, and depth, right? So out of this 3 dimension, if you are taking one single plane, this is actually your plane frame, and we can call it, okay, this is one plane. If all the forces are acting on this particular plane, we can call that all the force system are coplanar force system. इतना ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो ये हो गया आपका कोप्लेनर फोर्स. मतलब ऑल द फोर्सेस, इफ इट इज ऑल एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन, वी कॉल इट कोप्लेनर फोर्स, राइट?
अब कोप्लेनर फोर्स मतलब जो कि कोप्लेनर फोर्स सब फोर्स एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, उसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है. एक है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, एज यू कैन सी हियर यू कैन सी दिस इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, and another word is non-concurrent force system. Let us understand that also, what is non-concurrent force system also. Okay, so we call it, look here, this is called concurrent force system. इसका मतलब क्या होता है, मैं बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. वेरी लाइकली ये सब आप पढ़ चुके हैं, अर्लियर स्कूल डेज में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार बहुत अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. कोप्लेनर पार्ट हम पहले समझ गया है. concurrent force system means if all the forces are passing through a single point, then we can call it concurrent. Okay, all the forces, if I'm having multiple forces and if I can find one common point for all the force system, we can call it concurrent force system. For example, if you look at this force system, क्या देख पा रहे हैं, अलग अलग फोर्स है, बट ये सब पॉइंट का एक कॉमन पॉइंट ये हो गया है. देखिए ये जो पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट हो गया है, इसलिए ये हमारा कॉनकरेंट फोर्स हो गया है. और कोप्लेनर क्यों? कोप्लेनर सिंस ऑल दोस फोर्सेस आर acting in this plane, right? Since all the forces are acting in this plane, hence it is a coplanar force. And why concurrent? Concurrent means we are finding out a common point where all the forces are meeting. This is why we are calling concurrent force system, राइट. सो आपको समझ में आ गया. अगर आप कोई एक पॉइंट निकल पा रहा है जहाँ पे जितना सारा फोर्स आपको सिस्टम में सब एक ही पॉइंट के थ्रू से पास करके जा रहा है, तब उस फोर्स सिस्टम को हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं, राइट. एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है. क्यों? बिकॉज सब फोर्स, जितना फोर्स मैं देख पा रहा हूँ, व्हाट आर फोर्सेस दैट वी आर सीइंग हियर, these are all acting on one single plane, right? So this is a coplanar force system. But if you look closely, check all other forces, like, you know, let's say एक force है, another force is here, another force is here. So all forces are not passing through same point. If I extend all the forces, it is not all forces are going through one single point. Since all the forces are not passing through one single point, we are calling it is a non-concurrent system. So सिंपल वर्ड में हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट मिल सकता है जो कि सारे फोर्स एक कॉमन पॉइंट में पास ऑन कर रहा है, उसको हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे. अगर ऐसा नहीं है कि कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब हम उसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं. ये क्लियर हो गया. अब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में एक और स्पेशल केस आता है जो कि हम पैरेलल बोलते हैं. सी पैरेलल फोर्स, ऑब्वियसली दिस इज अ कोप्लेनर फोर्स. क्यों? यहाँ पे जितना सारा फोर्स है सब ये रेक्टेंगल के अंदर ही काम कर रहा है, राइट. और रेक्टेंगल इज अ प्लेन, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन, right? So we can call it, these are all coplanar force. But look here, is it a concurrent force system? Answer is no, because you cannot find one single point for all the forces, right? Now if that is the case, अगर कोई common point नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं. अब कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एक स्पेशल केस ऐसा होता है कि जहाँ पे जितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है वो सब एक दूसरे का पैरेलल है. अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जितना सारा चार जो फोर्स है, सब फोर्स एक दूसरे का पैरेलल है. इसलिए हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं. तो हो गया, ये हो गया हमारा कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम, ये हो गया कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम. इसका एक स्पेशल केस ये होता है जहां पे हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं. ऑब्वियसली दिस इज माय नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. अब तक क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो कि एक ही लाइन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. एक ही लाइन में दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है. अगर एक ही लाइन में दो फोर्स अप्लाई करता है तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं. लीनियर क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन में काम कर रहा है. कोलिनियर सेम लाइन में काम कर रहा है, राइट. सेम लाइन में अगर दो फोर्स काम कर रहा है उसको हम कोलिनियर बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, कोलिनियर मीन्स it is acting on a same line. Now collinear force is also a case of concurrent force system, because collinear force का कोई एक कॉमन पॉइंट आप निकाल सकते हैं. कहाँ पे है कॉमन पॉइंट? ये है हमारा कॉमन पॉइंट. सो एक कोलिनियर फोर्स भी एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एक हिस्सा है. तो अगर हम जो भी हम सीखे हैं, अगर हम समराइज करेंगे, यहाँ पे आता है, लेट मी इरेज अ फ्यू थिंग्स हियर. या तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं?
हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन सीखे हैं, जो कि एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में हम देखे हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखे हैं और एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखे। एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो है जहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता है, उसके बाद उसका एक स्पेशल केस होता है जो कि एक पैरेलल केस होता है। अगर पैरेलल केस नहीं है तो जनरल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। ये हो गया हमारा ये पार्ट। ओके, एक और पार्ट आता है कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या है कि अब तक मैं जो एग्जांपल आपको दिखा रहा था, इफ यू जस्ट लुक हियर, हियर जितना सारा फोर्स सिस्टम है सब मेरा इस प्लेन में ही काम कर रहा है। ऑल द फोर्स सिस्टम आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, इजंट इट? इफ यू लुक हियर, ऑल द फोर्स सिस्टम आर वर्किंग ऑन वन पर्टिकुलर प्लेन, right? So this is why we have earlier called it, okay, this the force system is my कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बट ऐसा सोचिए कि द मोबाइल फोन और द लैपटॉप, अब जिसमें भी ये वीडियो देख रहा है, लेट से मैं ऊपर से कुछ एक कुछ इफ आई जस्ट पॉइंट माय हैंड टुवर्ड्स लेट से यू नो let's say I'm pointing my hand on the screen, so this is going to actually go vertically, right? So this is not staying on the plane of this plane of the mobile phone screen or computer screen. So if a force is acting in this way, obviously this is not going to lie on this plane, it is going to be probably with some angle, right? Because this is not acting on the plane, we will call this system as a we are going to call it this system नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इसमें भी दो केस हो सकता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम कैसे? लेट्स से वी आर पुटिंग टू फोर्सेस, so if we put two forces, obviously this is, let's say we are putting two forces like this, we are putting one force like this, one force and another force like this, so this is two forces system acting on the plane. So this also could be your जनरल केस सिस्टम। सो दिस इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन। आई थिंक जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको और भी क्लैरिटी होते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हियर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये सब छोटे छोटे चीज़ हमें मिस हो जाता है बाद में, तो इसलिए वी आर कवरिंग ऑल दोस थिंग्स। सी, हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप फोर्स जब भी आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, व्हेन एवर यू आर ड्रॉइंग एन एक्सिस, वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम ऐसे होता है, सी लेट्स से आई पुट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट? नाउ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, तब जेड एक्सिस कौन सा तरफ होगा? जेड आप अपवर्ड भी हो सकते हैं जैसे मैंने ये दिखाया, और एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट? आइडियली जेड एक्सिस बोथ साइड इट इज पॉसिबल। ये हमारा कन्वेंशन ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मीन्स अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस डाल रहे हैं, इन दैट केस अगर हम एक्स से वाई डायरेक्शन में थंब पुट करेंगे, द वे यू आर सीइंग द थंब हियर, if we put our thumb in this order, let's say we put our thumb in this order and we try to rotate it, right thumb in this order, and we try to rotate from x towards y, direction is important। मैंने क्या बोला? राइट थंब रखेंगे, राइट एक्स डायरेक्शन से वाई साइड रोटेट करेंगे। यहाँ पे आप एरो देख पा रहा है, ये डायरेक्शन है, राइट? सो एक्स से वाई डायरेक्शन में हम अगर मूव करने का कोशिश करेंगे, तब हमारा थंब फिंगर, whichever direction the thumb finger is pointing at, that is going to be my z direction. So if I am rotating in this way, obviously my z direction is going to be in thumb side. That means this is going to be my positive z axis, right? Similarly, this is how we are going to build all the axis, x axis, y axis, z axis. यहाँ पे देखेंगे exactly हमने ऐसे किया। We if we clockwise, if we sorry counter clockwise in the right thumb, if we rotate it, the thumb goes up this way. This is z axis. Now you can apply for any other thing. For example, like if it is not x axis, do it with sequence. x axis y axis अगर नहीं होगा, लेट से आपको y and z होगा, तो आपको सीक्वेंस जाना है। x to y गया था, now you have to go from y to z. So now if you rotate from y to z, if you keep your thumb like this and then try to rotate y to z, the thumb actually points out towards you, right? So obviously from the plane it is coming towards you. That is going to be the axis of your x. So this is how we actually determine x, y and z axis. Similarly, like z x आपको होगा, तो आपको वैसे ही z to x रोटेट करना है। उसके बाद जो डायरेक्शन रहेगा राइट हैंड थंब, उस डायरेक्शन में आपको y होगा। ये सिंपल है, बट कभी कभी ये सब छोटे छोटे चीज़ भी हमसे छूट जाता है, तो हम ये सब छोटे छोटे चीज़ नहीं, हम इसमें हम गलती नहीं करेंगे। बट एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
आई थिंक ये पार्ट हमने कवर किया था। या ये पार्ट हम कवर किया था। या एक और बहुत एक सिंपल कंसेप्ट में आते हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखे हैं एसेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहाँ पे मैंने एक बात मेंशन किया था, बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स गिव्स यू यूनिक वे टू थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये मैंने बोला था, अगर आप नहीं देखे आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट फर्स्ट लेक्चर। बट एनीवे, here think what we are doing here. We are calling something in engineering mechanics, you will see measure it with the body, we will consider it to be rigid body. Now rigid body अगर हम बोल रहे उसका एक definition होना चाहिए, right? So the definition of rigid body is, let's say if this body that you are seeing here, let's say if this is a rigid body, then on the rigid body there are different forces would be acting. Now here in this picture you can see, like, f1, f2, right, and f3. These are the forces actually acting on this body. By definition, we call it, if a body is a rigid body, then you take any two particular point, okay, out of, let's say this is a stone, okay, stone or any particular object. अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लीजिए, okay, take any two particular point, let's say here that two particular point is A and B. Before applying force and after applying force, if the distance between these 2 points that you have considered earlier, if it is the same after applying the force, we will call it rigid body. मतलब इस पॉइंट में कोई फोर्स नहीं था, इस पॉइंट में आपको फोर्स आया है, तो जो दो पॉइंट आपने आर्बिट्ररी लिया था उसका जो डिस्टेंस था, अभी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ये सेम दो पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, लेट्स से इस पॉइंट में ये दोनों का दो पॉइंट का डिस्टेंस ए डैश बी डैश है, तो अगर वो बॉडी रिजिड बॉडी होगा, if it is meeting the criteria that AB equal to A dash B dash, as it is being mentioned here as AB equal to A dash B dash, what it is saying is this: कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट, कोई दो आर्बिटरी पॉइंट ले लीजिए, बिफोर फोर्स अप्लाइंग, आफ्टर फोर्स अप्लाइंग, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लैंग्वेज में। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Now, I mean, whatever that we have talked about, these things has been written here. Probably, I'll not go through the entire thing, but I think I have told you the essence of it, right? Here, one important point is there. Actually, solid bodies are never rigid. In actually, like, practically, if we see, no bodies is perfectly rigid body. They actually deforms. So if some, let's say some deformation takes place, what happens? Any two particular points that you're taking before applying force, after applying force, ये दोनों का distance अलग अलग हो सकता है. It is possible that these are different. But this difference that we are seeing before and after applying force, it is so negligible that we can consider it to be a rigid body. This concept, assumption of this rigid body will make our life very simple to analyze different body that you will see going forward. So many times, like, आप अगर पढ़ रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास में पढ़ रहा है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना छूट जाता है। रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी यही है, आप जितना समझ गया, बस इतना याद रखना जरूरी है कि ऐसे दो पॉइंट है, जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है बदल नहीं रहा है। सो एनी रिजिड बॉडी वी आर कॉलिंग दैट बॉडी दैट इज नॉट चेंजिंग, एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट that you are taking, they're not changing the distance. Only this part you have to remember. Now, एक और important part है जो कि particle है। ये particle word भी बार बार repeat होगा। Whenever we are going to talk about some complex problem later, you will see that we again and again we mention the word particle. So at least let's clear this concept, what we are calling it as a particle. Particle is also just like a rigid body. This is also a kind of idealization. Idealization means ऐसा ideally नहीं होता, but हम ऐसे कर रहे हैं to make things simple for us to make analysis. That's it. Think it this way. This assumptions is going to make our life simple. Okay. So with that in mind, this particle concept has been put forward. The idealization of particle is useful in dealing with translatory motion. We will talk about translatory motion in depth. Translatory motion of the rigid body, I think at this point you know what is rigid body. That could have a size of a car or a planet. So now, see, a car, one car or a planet, we can represent it as a particle. Okay.
So it would be very easy for us to understand a lot of things if we can do this kind of simplification, generalization. If we do it, it will be making things very easy. Okay, so हम किसको हम particle बोल सकते हैं? What thing we can call it particle? A body whose dimensions are negligible. Look at this. A body whose dimensions are negligible when compared to the distance covered by the motion. That we call it particle. That means उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होगा किसके कंपैरिजन में? इसका कंपैरिजन में कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस कंपैरिजन में इसका डायमेंशन अगर नेग्लिजिबल है, सोचिए कि एक कार 2000 किलोमीटर जा रहा है, तो 2000 किलोमीटर का रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में कार का जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है, इसके लिए हम उस कार को वी कैन कॉल इट पार्टिकल. whenever let's we are talking about like movement of the earth in the orbit, right? So in this case, the movement of the earth, we can consider it as a particle because that amount of distance it is covering, it is much smaller than the earth's dimension. ये है concept. Okay, इसको हम और भी expand कर सकते हैं. As an example देखिए, जो example मैंने अभी बोला on the similar thing that I have actually explained here. Sun, planet, moon, all those things rotating in the orbit, we can call it, we can idealize it as a particle. Now, this assumption cease to be valid when rotation of the rigid body is also involved. We will talk about the rigid body motion later. Then we will talk about how all the concept of particle actually is applicable there or not applicable. We'll talk about it. But I think at this point, it should be pretty clear to you, like हम particle किसको बोल रहे हैं, okay? Rigid body हम किसको बोल रहे हैं, because ये सब term बार बार आपको आएगा. और I think this is the essence. It's just not that like write the exam, get the better marks. ये सब simple जो concept है ना, आपको complex problem को बहुत आसान कर देता है, right? We will see many examples going forward. Now, मेन कंसेप्ट में आता है. ये कंसेप्ट भी आई थिंक आप क्लास 9-10 से भी जान रहे हैं. सो आई मीन उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट सम बेसिक में टच करके आई विल मूव फॉरवर्ड. Now force क्या है? Force characteristics of force, like if we see, this is a body. On this body there is a force acting. Let's say 100 kilonewton force is applying at an angle 30 degree, right? So for this force, what is the characteristics of force? First of all, this is the magnitude. 100 kilonewton is the magnitude. What is the direction? Direction is 30 degree inclined to something which is your x-axis, so 30 degree. So it has the direction towards this towards point A. It is acting at an angle 30 degree, so it has a magnitude, first point. Second, it has the direction, and next one, it is the sense. What is the sense? Sense is towards point A, or it could be away from point A, right? So at this case, it is towards the point A. ये जो part है, मतलब the towards point A, we call it sense of the force. This is very important because henceforward I'm going to take this term repeatedly and going to talk about it. So it's I mean, please be comfortable with these terms. The sense is towards A. Let's move forward. I think scalar vector, I do not need to talk about it, just because if you have forgotten what it is, I would highly request you just pause this video and read it. I'll not spend much time. Rather, I'll spend time where you need to put a lot more attention. Now, principle of transmissibility. This is also a very important concept. And if you know how to use it, it is going to make things very simple for you to analyze, especially when you're solving problem, right? When you're solving problem, it will be very easy. Now, let's understand first what is happening in principle of transmissibility. Okay, principle of transmissibility said that, let's say एक object है, let's say this is an object. Okay, let's say this is an object. On this object, the force is acting, which is the sense, the force sense is towards left side, right? Okay, now प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलते हैं कि हर फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये फोर्स, इफ आई टेक इट, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है. ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन बोल के भी देर इज अ टर्म. लाइन ऑफ एक्शन मीन्स, आई मीन, इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन along this, so this becomes your line of action. So for this point you can understand, I can extend it in this direction also. So this is my line of action, like the straight line to this force. So this dotted point that you see, this is basically line of action. ये part समझना जरूरी है. हाँ,
तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलते हैं कि वट एवर फोर्स दैट वी हैव, वी कैन शिफ्ट द फोर्स along the line of action. So आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन में एक एनिमेशन आएगा, close, pay close attention here. So the force is shown by the arrow. Now you will see that I can move this force along the line of action. You ready? So I have seen the dotted line is my line of action. Now I can shift this force anywhere along the line of action. Principle of transmissibility ये बोलते हैं कि external effect of a force on a rigid body is same for all the point of application along its line of action. ये बात बोल रहा है कि एक्सटर्नल ये फोर्स आप यहां रखेंगे और यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, any places that you are putting, it is going to have the same external effect. Doesn't matter where you are placing it along the line of action. If it is a rigid body. Now, rigid body kya hai? I think we have talked about it. So let's not. So I think you get the concept. Now, external effect should be same if you are actually moving the force along the line of action. So with that, let's move to the next one. Yeah. I think this is pretty clear by looking at it. You can understand both the forces are actually having the same action, right? Both the forces are having the same action here, same external effect. So important point here for us to understand is both are having the similar external effect, right? This is the highlight point, same external effect. We will, I mean, be comfortable with this concept because ये हम as a hack use करेंगे later to solve different problem. ओके, इनफैक्ट आज का लेक्चर में हम जितना कॉन्सेप्ट कवर करेंगे ये सब आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आया है, अभी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अलग से प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. ये सब जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वी विल यूज इट अ हैक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन. Okay, now let's move to the resultant concept. Resultant concept is also pretty clear to you, but still I will spend a few minutes on it. So resultant ये है, I mean, अगर आप अलग अलग फोर्स सिस्टम है, अगर आप इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे in this system you have F1 force and then you have F2 force, you have F3 force, right? So you can see the arrow here also, you have different force system. Now अब इसका resultant निकालना है. Whenever we are finding out the resultant, it is very important that इस सिस्टम में टोटल जो एक्सटर्नल इफेक्ट है रिजल्टेंट में भी सेम एक्सटर्नल इफेक्ट आना चाहिए. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट. I'll repeat once again. Whatever external effect is here in this system, the resultant should have the exact same external effect on a particle. Particle concept also you have covered, right? So we can replace this system with this and we typically call it R. R is resultant. So if R is a resultant force, obviously it should have an angle. Let's say it is making an angle theta. Okay, so this entire system we are replacing with the resultant. If it is a resultant, obviously there are two components which are important. ये बहुत सारे टाइम पे आप लोग ये गलती करके आएंगे एग्जाम में. अगर आपको कोई फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट, बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसकी सिर्फ रिजल्टेंट का कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, एंगल नहीं निकालता. ऑलवेज इफ यू आर फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट, find out resultant and angle both. Do not miss the angle. I hope you will note it down somewhere. Well, I think I have covered this. Nothing much to talk about now. Let's look at this problem. Okay. Here in this system, what you see here, you have a force system. Can you identify what all forces are working on this system? I think you can identify the force which is working on this system, which is let me put it this way. Yeah. So in along this line there would be a force here. Let's say this is FB. Along this chain there would be another force which is FA, right? Now if you think there are two forces acting, one force is something like this. Let's say
let's say this is FA, and let's say this way, this direction is F, sorry, there, that was FB. This is FB, and let's say this is FA. Now this, you have two forces, right? You have two forces. Now this is a concurrent force. Why? Because if you see, this is the common point for both of them, right? This is a common point. If the force system has a common point, what do we call? We call it concurrent force. You have learned it just earlier, right? So I think you get the idea. Now let's say इस force system के लिए मुझे resultant निकालना है. So what does it mean? ये दो force की जगह पे मैं एक force, I will replace it with one force. So this force will have a magnitude. This force is going to have the angle also, right? This is what we mean by resultant. Now let's move next. Okay, now we are coming back to the concept of how do we calculate um, the the resultant. Yeah, so there are two laws. I think you have learned about this law earlier, but still, I mean, let's highlight it once again. One law that you have, which is parallelogram law and triangle method. यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक मेथड में कंफर्टेबल रहता है, सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे. स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि ठीक है, अगर मैं दो फोर्स सिस्टम का अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करके अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, then fine, I do not need to learn about the triangle method, or vice versa. If I know about the triangle method, why should I learn about the parallelogram law? This concept is very flawed. Why? Because you will see that in some places it is very easy to use triangle method. In some other problem, it is much more easier to apply parallelogram law. We have to be flexible to use whatever concept that takes, because at this point you will not face any problem jahan pe when you are going to be asked to apply just a parallelogram law or find out the resultant. You are not going to be asked to solve any problem like this. Rather, you will be asked to find out much more difficult problem where this is going to take probably 5%. In that, we are expecting you to do things faster. We are expecting you to be flexible so that you can solve the problem whichever you can use, whichever method is faster, you can use it. With this concept, we are going to approach it. It's not that I will learn only one. So I will urge you to learn both this method and solve any problem using both of this method, not any one of them. This is very important, because यहाँ से छोटे छोटे करके स्टेप अगर आप छोड़ते रहेंगे ना, बाद में आके जब हम लेक्चर 10 लेक्चर 12 में आएंगे, तब आप देखेंगे कि आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही नहीं पा रहे. तो एट दिस पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू be comfortable, because we are not learning anything very difficult. You have already talked, you have already learned about all those things. We are just revising the concept, and revising the concept feels a little bit boring, right? But trust me, this is going to build your basics, and this is going to help you later to solve many more difficult problems later. So without any further, let's actually talk about both of these things. Even though you have learned about it, I'm going to talk about only the basics. I'm not going to go through this entire concept line by line, but I will just cover the basic concept, what it is here. Okay, what basically you need to remember, I will cover that. So यहाँ पे दो फोर्स है, यहाँ पे P1 है. Can you see this? This is one force, this is P1, and this is another force P2. The same system that you have seen earlier, right? आप पहले भी देखे हैं. यहाँ पे this is the system, एक force इधर एक force इधर. This is the concurrent force system. Similar force system हम यहाँ देख रहे हैं. Similar force system हम यहाँ पे देखें, दो force दो अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों के अंदर एक एंगल है, राइट? यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट. अब इस सिस्टम को हम resultant, we will find out the resultant using parallelogram force, parallelogram law. अब लॉ क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, if we take r square is going to be, you can write it down now, you can write it down, r square is going to be equal to p1 square. I know that you know it, but still, if you are attending this lecture sincerely to learn the subject, I will highly urge you to write it down, because it will help you to solve the problem very fast. Okay, P1, P2, and cos of this angle between this force, which is
My handwriting is not that good, but I think you get the sense. R square equal to 1 4 square plus another 4 square plus 2 times of P1 and P2 and cos of angle between these two forces. This part you should really feel very comfortable. So that means two force system being given there. You know the angle between these two forces. You do not have to use any other law. In that time, you have to use parallelogram law. Two force given, angle you know, you will use it. Square of each force plus 2 P1 P2 cos. Now this same thing we will learn with it a different terminology so that this concept gets cemented in your mind and you do not forget it. Now if this part is clear, this is R square. I have not still showed you the expression for finding out the theta. If you check carefully, alpha is the angle between these two forces and resultant is shown in blue color, where angle of the resultant is shown with P1 angle, which is the theta. So theta also you have to determine. So this part is clear. The same thing we are going to check it in some other notation. See, notation is different. You should feel comfortable now. Two forces, what all forces are there? One is P forces. Another is Q forces. So P square plus Q square plus 2PQ and cos angle between these two forces, which is theta, right? So I think you should feel comfortable now to use the parallelogram law. Now come to the angle. Earlier it was theta. Now this is the beta. So we do not have to consider alpha, beta, theta, gamma. We just have to see what is what here. What angle that we are trying to determine? The angle we are trying to determine is what is the angle that resultant has made with any one of the force. हमें ये डिटरमाइन करना है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कोई पर्टिकुलर फोर्स के साथ क्या एंगल क्रिएट किया है, वही डिटरमाइन करना है ना. सो ये बीटा जो एंगल है, ये बीटा हमको डिटरमाइन करना है. बीटा इट हैज़ क्रिएटेड द एंगल विथ पी फोर्स, राइट. तो अगर पी फोर्स के साथ किया है, in that case we will take Q force multiplied by sine between this angle, Q of sine theta divided by P plus Q of cos theta. Check the angle, take a pause if you're not still feeling comfortable, and then write down this, because no matter how many times you watch video, once you write it down, draw the diagram, write it down, things would be very, very clear to you. I think it would be very difficult for you to forget about it also. So remember what is hot. This part should be clear. Now, if you are clear about the angle, I think here also you should be able to draw the angle very, very, you can write the expression of the theta, right? Now, do not forget, this is a tan. This is a tan. So you have to always take a tan inverse of this to find out the beta. I think this part you know, so I'm not going to spend more time on that. Okay, so this is the parallelogram law. Very, very simple. Simple to remember, and we have seen how to read this also. Next, we will take just a special case of this parallelogram law. I think, if I ask you to write the expression of this, I think you should be easily writing this expression for this. This is P1 and P2. Angles has been changed. I think now you can easily write down the expression of R and theta here. Now there is a special case. If this angle between these two, alpha, it is 90 degree. This becomes your special case. We are going to use shortcut in that case. So for this, we are going to take this expression. That means if it is happening, if these two forces are there in the right angle, we will take P1 square plus P2 square root over of that is going to be your R, and the theta, that if theta makes with the P1, if the resultant makes it with P1, then it is going to be P2 by P1. This expression we will use many times, especially in the module class. So very quickly we will solve it. We will not apply any brain that time. So we know that if it is creating angle with P1 force, we know that it is going to be P2 by P1. Okay. If you write it down, I can assure you, you will not have any doubt later on whenever you are solving any problem. So probably you can take a pause and you can write it down if you are having notepad. I ideally, whenever I used to teach this subject in the class, I used to tell all my students to write it down, because once you write it down, you remember.
Anyway, let's move to the next law, which is triangle law of force. Now, ये triangle law of force में भी we can talk about it, but we will understand it, graphically what it is saying. So earlier ये force system हमने देखे हैं, right? Like two forces P1 and P2 acting with an angle theta. We have seen this angle. अगर हमें triangle law apply करना है, तो हमें triangle form करना है, right? Before, if we are trying to apply triangle law, first we have to form a triangle, right? To form a triangle, the direction is very important. The direction is very important. Here, you see the force here. This force we will move from here, because we have to, the theorem says if this is one force, if this is another force, the resultant is going to be this force with this direction. Direction is very, very important. See the red force system that I have shown. Check the arrow. We have to always form the triangle in this way to make sure that we can apply triangle law. Whenever we see this type of setup, we are not going to put any other thought process into the mind. ठीक है, ये पार्ट हमें याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, कब कौन सा लॉ हमें अप्लाई करना है और कैसे हम बहुत फास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वेल, अगर ट्रायंगल लॉ हमें अप्लाई करना है, हमें फोर्स को रीओरिएंट करना है. फोर्स को अगर रीओरिएंट करना है तो we have to rearrange the force in such a way that it forms a closed triangle. So from here to here I am going, right? From here to here I am going, and after that from here to here I am going. If I am going this way, then this line becomes my resultant. This is what it means. So basically in this way you can understand. Now we have to form a triangle, right? Now this is what we are going to do. Now check, I'm going to show the animation. So to form a triangle, we have to move this force. And where do you have to put it? This is what we are going to do it. See, this force has moved. Check the direction, the sense, I have kept it same. See where it was. From here I have moved it here so that I can form a closed triangle. You see the angle still remains same, whatever theta. So these two forces were having an angle theta. Now also the angle is theta. So theta angle remains same. It is not changing. Whatever I have done, I have just moved the force from one point to another point. Now, if after we move it, now you can use the triangle force law. What is the resultant now? Very simple. This is going to be the resultant. Clear now? So now this part should be easy to you to understand, that if we are having a force in this way, we can easily form a triangle. Now, अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मूला हम कैसे करते हैं. अर्लियर हम पैरेललोग्राम में अब देखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos angle between these two. You have seen that was a formula earlier. Now for the triangle law, what we will do, we will the same thing that you have explained, that has been written. If you want, you can take a pause here and you can read it. Exactly the same thing that I have described, this is being written here in the word. You can read it and you can try to make sense out of it. But I think if you have followed me, that should be good enough for you to understand, because आपको एग्जाम में पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ ये स्टेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा. टिपिकल एट द स्टेज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग ये नहीं देते. बट एनीवे, डू नॉट टेक माय वर्ड्स कि सर ने बोला तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम बोलेंगे सर बोला था. ऐसा नहीं है. Just saying that, the essence is to make you feel comfortable when you're applying the law. That's all, nothing else. Okay, now let's come back to the angle. Okay, how do we determine it? Now, triangle law is very very powerful because कभी कभी एक लाइन में हम बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे, इट विल टेक 2-3 स्टेप्स. हम 2-3 स्टेप का जो स्टेप्स है वो हम एक स्टेप में कर सकते हैं. ट्रायंगल लॉ फोर्स का लॉ ये है. पहले तो आप देख लीजिए कि ट्रायंगल का सिस्टम कैसा होना चाहिए. यू सी द एरो एंड यू सी द एरो हियर, एंड importantly you see the arrow here. Okay, if this is the system, then only you can write it here. This is very important. Now this is called sine law. Here, what is the angle between this force? It is theta. But for our simplicity we have said, okay, these are different angles here.
राइट। तो हम कैसे इसको बोलते हैं, F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट साइड एंगल। F1 के ऑपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। आई थिंक यू गेट द पॉइंट नाउ what I am trying to tell you. Now, can you do the same thing for the next force, which is this one, F2 opposite angle. Opposite angle, think it this way, other than this, this side, there are two more sides in the triangle, this side and this side. What is the angle formed by these two, other two sides, which is this, or I'm saying for shortcut, opposite sides, basically same thing, saying in a different way, nothing else, right? Simple. Okay, so अगर ऐसा है तो I think this part also you're able to understand. F2 by sin beta, and the last one is R by what? R by this angle. R by this angle. This angle, if you think total angle of the triangle is 180, so this particular angle is going to be 180 minus this, right? Because all this and this together, these are all 180. So if this and this are known, then this is 180 minus alpha minus beta. So this is the expression we have to remember. If we are applying triangle law, make sure the orientation is correct. If you see this orientation, do not use parallelogram. Write this equation, job done, move to the next step. This is what we call it speed. Okay, you can solve this problem using parallelogram principle also, but you will take a few more steps. Because ये फोर्स सिस्टम को पैरेललोग्राम में करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको दिक्कत क्या होता है मैं बताता हूँ। आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, बट आई विल टेल यू, आई मीन what you have to do extra. Why will you lose time if you apply parallelogram? So parallelogram law apply करने के लिए आपको क्या था, ऐसा था और ऐसा था। अब ये देख रहा है, from a point it is away from these 2 points, and then there was an angle alpha between this. This is P1, right? And this is, let's say, P2. यहाँ पे फोर्स सिस्टम आपको कैसा है, यहाँ पे फोर्स सिस्टम ऐसे दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। अगर फोर्स सिस्टम कभी अगर ऐसा दिया हुआ है, देखिए एंगल, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हियर। लेट्स से दिस इज P2 एंड दिस इज P1। अगर आप एंगल दिया हुआ है ये सब चीज़ों के बीच में, तब आपको एकदम ब्रेन यूज़ नहीं करना है, आप डायरेक्टली ये जो है ये रिजल्टेंट है, राइट? इस केस में आपको ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना चाहिए। अगर इस केस आपको डायरेक्ट मिल गया, तब आपको पैरेललोग्राम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें फोर्स सिस्टम जैसे दिया जाएगा हमें वैसे यूज़ करना है। अगर ऐसे करेंगे आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम का छोटा एक पार्ट आप एकदम ये एक लाइन में कर सकते हैं। इधर पैरेललोग्राम में आप एक लाइन में कर सकते हैं, नहीं तो ट्रायंगल लॉ में आप एक लाइन में कर सकते हैं। ये मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वेल, ट्रायंगल मेथड, आई थिंक अगर आप वो समझ गया था, ये भी जो ट्रायंगल लॉ, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कैसे यूज़ होता है ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसे करता है। तो यहाँ पे अलग अलग नोटेशन मैंने इसलिए यूज़ किया कि आप कंफर्टेबल हो जाए कि आप कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल P बाई कौन सा एंगल होना चाहिए, ऑब्वियसली ये एंगल होना चाहिए, सो P डिवाइडेड बाई साइन बीटा, इफ यू सी हियर P डिवाइडेड बाई साइन बीटा, राइट? Similarly, here you can see Q divided by sine. Why it is that you can understand. So I have given you many different examples so that you feel comfortable with different system. Now, यहाँ पे एक और important बात है, ये जो लॉ है हम जैसे पहले बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लॉ के लिए हमें ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। दिस ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है ट्रायंगल लॉ के लिए। अगर ऐसा है तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट। ये सिस्टम के लिए ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल होता है। अब ये आता है, देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, राइट? ध्यान रखिए, अभी अगर आपको ये एंगल आप अगर पता है, ये एंगल आपको अगर पता है, आप डायरेक्टली
कोसाइन लॉ भी यूज कर सकते हैं। ये जो लॉ होता है इसको हम साइन बोलते हैं। क्यों साइन बोलते हैं? क्योंकि देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ साइन है, राइट। तो ट्रायंगल का भी दो लॉ होता है। ट्रायंगल का दो लॉ होता है, एक साइन होता है जहाँ पे पी बाई साइन एंगल होता है, और रिजल्टेंट देखिए इसके लिए अलग कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इस एक्सप्रेशन से ही सब कुछ आ जाएगा, थीटा एंगल सब कुछ इसी में आ जाएगा। अगर आप अलग अलग निकालना चाहते हैं तो उसको आप कोसाइन लॉ यूज करके भी कर सकते हैं। कोसाइन लॉ यूज कैसे करेंगे? ये एंगल आपको दिया हुआ है, दो एंगल बिटवीन दिस टू इफ इट इज गिवन, then you can use one single line and can solve the problem, which is p square plus q square, here minus it is a triangle. See parallelogram में क्या था? It was plus 2pq angle between these two forces. याद आ रहा है? मैं आपको दिखा देता हूँ कि याद आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए एंगल बिटवीन दिस टू था और ये प्लस साइन देखिए, साइन देखिए, साइन प्लस है, राइट। और इसमें ओरिएंटेशन देखिए, ओरिएंटेशन क्या था? ओरिएंटेशन ऐसा था और इसका ओरिएंटेशन ऐसा था। दिस इज योर टिपिकल पैरेललोग्राम सेटअप। अगर मैं आपको ट्रायंगल लेके जाऊंगा तो ट्रायंगल का सेटअप है ये, ट्रायंगल का सेटअप है ये है आपको ट्रायंगल का सेटअप। ट्रायंगल सेटअप में अगर आपको सब एंगल पता है, ये एंगल पता है, समहाउ लेट्स से आपको इसी एंगल पता है, तो आप क्या करेंगे? इफ दिस इज P and this is Q, that means PR square is going to be P square plus Q square minus 2PQ cos alpha, minus it is. That is very important for us to remember. Okay. So here, depending on what type of problem I see, what all things we have learned. तीन ही चीज सीखा है। सी पैरेललोग्राम में एक ही लॉ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस, इतना ही सीखा है पैरेललोग्राम में। ट्रायंगल लॉ में पहले आपको ओरिएंट करना है, अगर ऑलरेडी ओरिएंट किया हुआ है तो इवन बेटर, लाइफ इज इवन बेटर। यू डायरेक्टली राइट, यू कैन डायरेक्टली राइट साइन लॉ, or if the angle between these two forces being given, then you can directly write down this equation and can solve the problem. I hope this is clear. I have actually talked quite a lot in depth with this. So now I think this is the time that you solve the problem, and if you solve the problem you'll feel comfortable. Now this is a problem for you to the solve to this I mean try to do the solution. Here important part is solve it in two different method. Now while looking at it, if you have to use which method it is actually suiting even better, by looking at it, I think if you're following my discussion it should be very very clear that it is no brainer that it is a parallelogram principle. Why? Because the setup is this. This is the setup. This is the parallelogram setup. If it is a parallelogram setup, then what do you have to determine? You have to determine the angle, right? So if this is 30 degree, this is going to be how much? This is going to be 60 degree angle. If this is 45, this is obviously going to be 45, right? This is going to be 45. So what is going to be the angle, the total angle between this? This is 60 plus 45. I can, in short, I can write how much it is, 105, right? 105. So this angle is 105 degree. Now what do you have to do? 30 square plus 50 square plus 2 PQ, that means 30 into 50 into cos 105. Problem solved. That's it. The problem is that simple. Now if you have to solve this problem in triangle method, what do you have to do? First of all, you have this line, right? You have to shift this force from here to here. First of all, you have to draw the vertical line, right? You have to draw the vertical line. Let's say this vertical line is set, right? This vertical line is set. I think you were able to understand this vertical line is set. With this vertical line, how much angle that it is actually creating? This is creating an angle with the vertical 45 degree, because you remember this was 45 degree, na?
This is 45 degree. If this is 45 degree, this is 45 degree angle. If this is 45 degree angle, what I'm trying to do, I'm just trying to move this force to this point. That's it, nothing much. Okay, if this angle is 45 degree, how much is this angle? How much is this angle? This is going to be, if see, if this is 30 degree, obviously this is going to be 30 degree, right? If this is 30 degree, if this is 45 degree, this is also going to be 45 degree, right? This is also going to be 45 degree. So how much is this angle between these two forces? 35 plus 45. Obviously the angle between this is going to be how much? 45 plus 30. So if I erase it and then try it, I not selected the right one. Let me select the eraser. So how much is it? It is for 75. So basically this is 75. Now you have a setup of triangle. That means one is here. This is 30 degree angle. This is 50. Right? This is 50. I'm just putting some wrong click. Okay. So this is there, and the next force, you know that with the vertical, it is actually moving at a 45 degree angle. The angle is not 45, but I think you get the picture. How much is the angle? That is 75. We have just calculated, right? This is 75. What is this force? This is 30 Newton. This is 30 Newton. Now you get a what setup? What setup you are getting? You are getting a triangle setup. Which formula you are going to use for R? Again, very simple. You are going to use P square plus Q square minus 2PQ angle between these two forces. Remember, this is what we have discussed earlier. You remember? These are the two forces, P force and Q force. What is the angle between this? This is the gamma angle and this is the gamma angle. Now, this is why I'm telling you, you should feel comfortable to solve the same problem using any method that comes up, right? So in our next class, we will solve some more problem, and then we will continue with this lecture in the subsequent class. So I will try to upload the lecture. Quite frequently, so that if you are attending engineering mechanics class, you can go as per this schedule, so that you feel comfortable when you are attending any class or before going to the class, or if you are just watching it to make your concept clear. But if you have come until this point, I would highly suggest you just drop your name from where you are watching this video. What is your name and where you are watching this video from? That will help me to understand how you are. If you are facing any difficulty in the whole lecture, please let me know, so that I can help to simplify things even further. Please let me know, because I'm going to record my lectures going forward as a continuation of this series. So thank you for watching, and with that note, I will stop the video now. Thank you once again.